Okay, so we talked about Max's mechanical issue and his DNF. What about his race start? It was also terrible. Yes. Yes, again, with the only thing that happens with the cars with massive developmental issues in in battery recharge and development deployment. Max suffering the only issue that Lawson suffered in Australia. He didn't get the whole battery recharge during the formation lap, and then when he started the race, the car's battery pushed him back, and then it didn't deploy, it didn't recharge fast enough to push him. And even during the blue lights, he couldn't even manage to get the turbos spooled up that much. The problem is with super clipping, कुछ गाड़ियां जिनमें अगर ये इश्यूज आते हैं ना, वो इश्यूज प्रोलॉन्ग कर देते हैं आपके स्टार्ट के रीस्टार्ट तक। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है इन गाड़ियों के लिए, और खासकर the Ford engine is not working that much in terms of this. Racing Bulls somehow gotten the better hand of it. Maybe they have shown quite a lot of pace in this race and in the previous race as well. The problem with Red Bull is that's their parent team, but the problem is facing them is basically the cars. Even though in terms of race pace, they have good race pace. Hajar showed quite a good race pace, decent race pace. The problem comes in the drivability of the car. Max was continuously saying that check the drivability. I cannot keep the car on the road. अब उसमें ना एंथनी डेविडसन जो स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से इनका टेक्निकल एनालिस्ट भी बना हुआ है, उसने ना एक छोटी सी कॉम्पाइलेशन दिखाई regarding how Max is driving the car during the qualifying and even before he DNF'd. Whenever he was turning the car in the corner, बार बार ना एक मतलब के शिफ्ट आता है, एक ओवर यूज टॉर्क आती है, बैक एंड टॉर्क एकदम से पुश करती है गाड़ी को। इवन दो ये गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब बैटरी डिप्लॉयमेंट करते हुए ना टॉर्क बढ़ रही है बहुत ज्यादा गाड़ी में, द टॉर्क इज इंक्रीजिंग व्हेन एवर यू डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट। उसकी वजह से मैक्स इज सफरिंग फ्रॉम स्लाइट से नजेस ऑफ ओवरस्टेयर। अब उसकी वजह से गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी इवन कॉर्नर एंट्री पे भी बहुत गंदी हुई हुई है। उसकी वजह से ही सफरिंग अ लॉट ऑफ ग्रिप लॉस,